Hello, viewers and my dear students. This is Dr. Gyanendra from Sri Shivaji Law College, Parvani. Students, today we will discuss Article 12 of Indian Constitution, which provides the definition of state. Why need to study state? The friends, it is important that all fundamental rights are available against the state only. Hence, there is a need to study the concept of state because we must understand that what is meant by state. Fundamental rights are natural rights which are indispensable in nature. These rights are available only to Indian citizens, and these rights are enforceable against the state only. Hence, there is a need to study the concept of state. The concept of state जानना ज़रूरी इसलिए है कि जो फंडामेंटल राइट्स है वो पूरे स्टेट के अगेंस्ट भी यूज़ करने वाले हैं या अगेंस्ट अवेलेबल है। तो स्टेट क्या है ये जानना बहुत ज़रूरी है। Definition of state which is provided under Article 12 of Indian Constitution. In this part, unless context otherwise requires, the state includes. आर्टिकल 12 में ये दिया है कि डेफिनेशन ऑफ स्टेट है और वो बोलता है इन दिस पार्ट अनलेस कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स state means and include following things. First thing, the Union of India and Parliament of India means central government and the Parliament of India, the state government and state legislatures, local authority and any other authority. Okay, so these are the four main components of the state under Article 12 of Indian Constitution. Means इनके अगेंस्ट में, ये स्टेट के कंपोनेंट्स के अगेंस्ट में फंडामेंटल राइट्स हम क्लेम कर सकते हैं। इसका मतलब है कि ये जो एलिमेंट्स है, ये जो फैसेट्स है, ये फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन नहीं कर सकते। ऐसा होता है फंडामेंटल राइट का वायलेशन इनके थ्रू, तो हम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स में जाके हमारा फंडामेंटल राइट्स इन्फोर्स कर सकते हैं। स्टेट द फ्रेज अनलेस context otherwise requires widened the scope of Article 12 of Constitution. This phrase which is used, the context otherwise requires, means there is a scope for interpretation of Article 12 of Indian Constitution. Means some instrumentality of state can be imposed on certain bodies. Any new authority can be added in Article 12 of Indian Constitution by High Court and Supreme Court of India. Supreme Court and High Court in any landmark judgment inserted many new authorities under Article 12 of Indian Constitution. So there are various case laws. बहुत सारे ऐसे केस है जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने इंस्ट्रूमेंटलिटीज़ ऑफ स्टेट को इम्पोज किया है और ट्रीट किया है कि ये एक अथॉरिटी वो स्टेट होंगी. सो एनी अदर अथॉरिटी एज वाइडनड द स्कोप ऑफ the Article 12 of Indian Constitution, and Constitution, the and this judiciary, particularly Supreme Court and High Court, widened the scope of Article 12 of Indian Constitution. So landmark judgments we will discuss now. हम एक एक जजमेंट हम अभी देखने वाले हैं. where a workplace Whether a workplace is a state or not. Vishakha versus State of Rajasthan, AIR 1997. Supreme Court of India held that workplace is a state under Article 12 of Indian Constitution. This case is also known as Bhavri Devi's gang rape case, where Supreme Court confirmed that if a rape is committed on a woman at workplace, then workplace must be treated as a state under Article 12 of Indian Constitution, and fundamental rights are available at that private workplace also. And in this case, Supreme Court issued directions to all state authorities where women are working, and it was made mandatory to establish Vishakha committees for the protection of women or for the protection of sexual harassment at workplace of the woman. So workplace was held as a state under Article 12 of Indian Constitution. Then, whether a husband is a state or not, it was a very crucial question which was asked in Bodhisattva Gautam versus Subra Chakravarti, AIR 1996. Supreme Court of India held that husband is a state under Article 12 of Indian Constitution. He cannot violate the fundamental rights of wife. So it was a very landmark judgment of Supreme Court, where the husband communities were treated as the
state under Article 12, and wife can claim fundamental rights against the husband. It means husband is a state under Article 12. सो husband जो है वो भी स्टेट है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने ये बोधिसत्व गौतम के केस में कहा है. नेक्स्ट, वेदर जुडिशियरी इज अ स्टेट. अब जुडिशियरी जो है वो स्टेट है क्या नहीं है, इसके बारे में एक लैंडमार्क जजमेंट हुआ था AR अंतुले वर्सेस RS नाइक AIR 1989 में. सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हेल्ड दैट द एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट ऑफ जुडिशियरी is a state under Article 12 of Indian Constitution. So, judiciary is divided into two categories: administrative part of judiciary and the judicial part of judiciary. So, administrative part is available under Article 12 of Indian Constitution, whereas judicial part is not available. Means the administrative judiciary is a state under Article 12 of Indian Constitution, and fundamental rights can be claimed against such administrative judiciary. Whether BCCI is a state. BCCI is a body which controls the cricket in India. Whether it was a state under Article 12 or not, it was asked a question in Zee Telefilms versus Union of India AIR 2005. Supreme Court of India held that BCCI, who controls the cricket game in India, is not a state under Article 12 of Indian Constitution, and hence fundamental rights are not available against the BCCI. तो BCCI फंडामेंटल राइट के दायरे में नहीं आता है क्योंकि वो स्टेट नहीं है, क्योंकि वो एक प्राइवेट स्पोर्ट्स बॉडी है और स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन है और उनका अलग ज्यूरिसडिक्शन है, तो वो स्टेट नहीं है. वेदर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया इज अ स्टेट. एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया वर्सेस नरगिस मिर्जा AIR 1981 is a landmark judgment of Supreme Court where air hostess was terminated from her service, and it was challenged under Article 12 of under Article 32 of Indian Constitution that it was a violation of fundamental right in the nature of right to life and personal liberty. Supreme Court struck down the rules made by the Airport Authority of India, and it was held that the International Airport Authority is a state under Article 12 of Indian Constitution. So friends, the next question was asked that whether private engineering colleges are state or not. ये जो प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस है, बाकी गवर्नमेंट कॉलेजेस है, गवर्नमेंट सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट के कॉलेज है, वो तो स्टेट है ही, मगर प्राइवेट जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस है वो स्टेट है क्या नहीं, इसका एक क्वेश्चन पूछा था सुप्रीम कोर्ट को अजय हासिया वर्सेस खालिद मुजीब के केस में. तो ये केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस स्टेट है, और इसके अंदर एक क्राइटेरिया लेट डाउन किया कि कौन से एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस स्टेट हो सकते हैं या नहीं हो सकते. तो उसका क्राइटेरिया था कि शेयर कैपिटल, अगर कोई शेयर कैपिटल है यूनियन और स्टेट और लोकल अथॉरिटीज़ का एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, तो वो स्टेट है. फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाता है, अगर केंद्र सरकार राज्य सरकार कुछ ग्रांट इन एड प्रोवाइड करता है, फाइनेंशियल मदद करता है, तो वो भी बॉडी स्टेट है अंडर आर्टिकल 12 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. अगर डीप एंड परवेजिव कंट्रोल है स्टेट का अगर एक आधी बॉडी के ऊपर, तो वो भी बॉडी स्टेट है. अगर फंक्शंस जो डिस्चार्ज करती है एक आधी बॉडी वो पब्लिक इन नेचर है, तो वो भी स्टेट है और मोनोपोली स्टेटस है. फॉर एग्जांपल इंडियन रेलवे है, स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन है, they have monopoly over a particular trade or business. So all these bodies are state under article 12 of Indian Constitution. तो इनके अगेंस्ट में फंडामेंटल राइट्स अवेलेबल है. So thank you friends for your patience listening. If you like this video, please share it with your friends and colleagues. Thank you.